प्लेक्सपो ने भारत के पहले प्लास्टिक प्रदर्शनी के रूप में शुरुआत की। प्लास्टिक उद्योग में सहयोग के लिए एक मंच स्थापित किया। वर्षों में वृद्धि, प्रत्येक संस्करण के साथ प्लेक्सपो पैमाने और प्रभाव में बढ़ता गया। नए विषयों, उभरते रुझानों और विविध प्रदर्शनों का परिचय कराता गया, जो उद्योग की गतिशील प्रकृति को दर्शाते थे। 2019 में मुंबई में आयोजित संस्करण ने बड़े पैमाने पर भागीदारी के साथ एक उच्च बिंदु बनाया। 2020 में महामारी के बावजूद हमने सफलतापूर्वक एक वर्चुअल प्रदर्शनी के साथ अनुकूलित किया। अब जब हम प्लेक्सपो इंडिया 2024 के लिए गांधीनगर गुजरात में तैयारी कर रहे हैं, हम गर्व के साथ अपने सफर को देखते हैं। यह आयोजन अब तक का हमारा सबसे बड़ा होने का वादा करता है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक और स्थायी समाधान प्रदर्शित किए जाएंगे। प्लेक्सपो इंडिया 2024 का आयोजन गुजरात स्टेट प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन GSPMA द्वारा किया जा रहा है। 1970 में स्थापित GSPMA गुजरात और पूरे भारत में प्लास्टिक उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है, जो 3500 से अधिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक सदस्यों में से एक होने के नाते GSPMA प्लास्टिक उद्योग के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। प्लेक्सपो इंडिया, जो भारत में प्लास्टिक प्रदर्शनी आयोजित करने वाला पहला था, एक महत्वपूर्ण आयोजन बन गया है। 8 सफल संस्करणों के साथ यह प्रदर्शनी उद्योग में सहयोग के लिए नए मानदंड स्थापित करती रहती है। इस वर्ष हमें दिसंबर 6 से दिसंबर 9 तक गांधीनगर गुजरात में प्लेक्सपो इंडिया 2024 की मेजबानी करने का उत्साह है। यह आयोजन अत्याधुनिक तकनीकों को प्रदर्शित करने और अनमोल नेटवर्किंग अवसरों को बढ़ावा देने का वादा करता है। हम अपने प्रायोजकों को उनके अटूट समर्थन के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम मिलकर न केवल प्लास्टिक उद्योग के भविष्य को आकार दे रहे हैं, बल्कि स्थायी विकास में भी योगदान दे रहे हैं। निवेश के उद्देश्य से गुजरात में प्लास्टिक उद्योग के लिए कई लाभ और विकास के अवसर हैं। विशेष रूप से प्लास्टिक निर्माताओं के लिए गुजरात में निवेश करना महत्वपूर्ण फायदे प्रदान करता है। गुजरात का रणनीतिक स्थान व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य में कांडला और मुंद्रा जैसे प्रमुख बंदरगाह हैं। ये बंदरगाह कुशल निर्यात और आयात गतिविधियों को सुगम बनाते हैं। राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, SEZs और समर्पित प्लास्टिक पार्कों का घर है। भारत में ही प्लास्टिक उपभोक्ता 2025 तक 20 मिलियन टन से अधिक होने की आशंका है, जो देश के तेज औद्योगिक विकास और विस्तारित उपभोक्ता आधार को प्रतिबिंबित करता है। प्लेक्सपो पर प्रदर्शनी करके आपको केवल अपने नवाचारों को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का मौका होगा, बल्कि आपको उद्योग के नेताओं के साथ नेटवर्किंग करने, नवीनतम प्रवृत्तियों के बारे में अनुभव प्राप्त करने और प्लास्टिक के भविष्य को एक सतत और कुशल दिशा में ले जाने का अवसर मिलेगा। यह जानकारी उन कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो वैश्विक फुटप्रिंट को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। अब आइए प्लास्टिक उद्योग में अवसरों का अन्वेषण करें, विशेष रूप से बायोपॉलिमर, बायोप्लास्टिक्स, रिसाइकलिंग और सरकारी समर्थन में। बायोपॉलिमर, जो नवीनीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होते हैं, और बायोप्लास्टिक्स, उनके बायोडिग्रेडेबल उत्पाद उद्योग में क्रांति ला रहे हैं। वे पारंपरिक प्लास्टिक के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करते हैं, हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करते हैं और स्थायी उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करते हैं। गुजरात सरकार, साथ ही केंद्र सरकार, बायोपॉलिमर और बायोप्लास्टिक्स में अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रोत्साहन, सब्सिडी और फंडिंग सहित मजबूत समर्थन प्रदान करती है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों और समर्पित प्लास्टिक पार्क जैसी पहल उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और नियम प्रदान करती है। एक्सपो एक ऐतिहासिक प्रदर्शनी स्थल प्रदान करता है, जिससे आपकी दृश्यता और बातचीत को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया है। फायदे को पहचानते हुए हम प्लेक्सपो की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए रोड शो आयोजित करेंगे। इस बार प्लेक्सपो इंडिया में हमें 500 प्लस एग्जिबिटर्स की उम्मीद है, जो अप्रोक्सीमेटली 25,000 स्क्वायर मीटर स्पेस रिजर्व करेंगे और 50,000 प्लस बिजनेस विजिटर्स की आने की अपेक्षा है। इस एग्जीबिशन में 500 करोड़ से अधिक बिजनेस
और ट्रांजैक्शंस होने की उम्मीद है। प्लेक्सपो इंडिया में पार्टिसिपेशन के लिए पैकेजेस इस प्रकार हैं। Let's have valuable message from GSPMA and Plexpo chairman along with industry leaders. Dear members and industry colleagues, established 1970, the Gujarat State Plastic Manufacturers Association (GSPMA) is one of the premier plastic association in the country, representing the working for the case of the plastic industries since its inception. GSPMA is representing in all important central, state and non-government bodies with a vision to felicitate the Indian plastic industries globally. Major activity including presenting the industry's key issue before complaint authorities, organization, seminar, workshop, delegation to national and international fair exhibition, study tour, environmental awareness program, act, thereby creating awareness about plastic and the environment. More than 50,000 units are working in the plastic industries, which 95% fall in MSME category. India export about 35,000 crore. The turnover of the plastic industries will cross 10 lakh crore by 2027. The industries will extraordinarily grow in the coming year. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji dream of Bharat become a $5 trillion economy in the year to become. Plastic play an important role in the country's export and contribute significantly to government exchange. Now the association flagship and dream project 9th edition of Plexpo India 2024 will take place in December 2024 at Helipad Exhibition Center, Gandhinagar. Spread over more than 25,000 square meter area, more than 500 plus exhibitors. I welcome you all to be a part of the magnificent event by way of exhibitors and visitors. Ask your business colleague to join the movement to achieve grand success. કે જીએસપીએમએ એટલે ઓલ્ડેસ્ટ એસોસિએશનમાંનું એક ઇન્ડિયાનું એક લીડિંગ એસોસિએશન જેને કહેવાય, જે ફર્સ્ટ કે સેકન્ડ નંબરનું જેને એસોસિએશન કહેવાય એવું એસોસિએશન છે. છેલ્લા 60 વર્ષથી કાર્યરત છે, પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગના વિકાસ માટે કામ કરી રહ્યું છે. આખા ઇન્ડિયામાં પ્લાસ્ટિકના કોઈ એક્ઝિબિશન જ્યારે નહોતા ત્યારે પહેલું એક્ઝિબિશન ઇન્ડિયામાં પ્લેક્સપો સંસ્કાર કેન્દ્ર પાલડી ખાતે 79માં કરવામાં આવેલું. ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં આ 9મો શો છે. 9મો શો ગાંધીનગર ખાતે હેલિપેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે 6, 7, 8, 9 ડિસેમ્બરના રોજ યોજવામાં આવેલો છે. પણ પ્લેક્સપો ઇન્ડિયા 24 એટલે એક ફ્લેગશિપ બ્રાન્ડ ઓફ ધી જીએસપીએમએ છે. મિત્રો, તમને ખાસ આ વખતની વાત કરું તો આ વખતનું પ્લેક્સપો ઇન્ડિયા આખું જુદા જ સ્વરૂપમાં રજૂ થઈ રહ્યું છે, નવા સ્વરૂપમાં રજૂ થઈ રહ્યું છે. ખાસ કરીને અમે જેને કહેવાય કે પેવેલિયન, સ્ટાર્ટઅપ પેવેલિયન પણ અમે એન્ટરપ્રિન્યોર્સ માટે મૂકેલું છે, ન્યૂ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ માટે મૂકેલું છે. એગ્રીકલ્ચર પેવેલિયન, રિસાયકલિંગ પેવેલિયન, મેડિકલ પેવેલિયન, આ બધા પ્રોવિઝન અમે અમારે ત્યાં એન્વાયરમેન્ટ માટેનું થીમ પેવેલિયન પણ અમે પ્રોવિઝન કરેલું છે. વિઝિટર પ્રમોશનની તમને વાત કરું તો અમે એક્ઝિબિટર માટેની ખાસ જે ચિંતા કરી છે એ એક્ઝિબિટરને સારા વિઝિટર મળે એની અમે ચિંતા કરી છે. અને એના માટે અમે ઓછામાં ઓછા ઇન્ડિયાના 20 થી 22 સિટીમાં અને ફોરેનના પણ 2-3 સિટીમાં અમે એનું વિઝિટર પ્રમોશન કરવાના છીએ. અમારું ઓલરેડી ટાઈઅપ તાઇવાન સાથે, ચાઇના સાથે, અમારે ઈરાન સાથે, મ્યાનમાર સાથે વગેરે વિઝિટર પ્રમોશન, પાર્ટિસિપેશન પ્રમોશન અમારું થયેલું છે, જેમાં અમને સારા એવા બુકિંગની અપેક્ષાઓ મળી છે. અને મને લાગે છે કે આ વખતનું પ્લેક્સપો એક ગ્લોરિયસ, એક વિશાળ કાય પર અને પ્લેક્સપો બ્રાન્ડ એક ફ્લેગશિપ બ્રાન્ડ છે એ તો અમે પ્રૂવ કરેલું જ છે. પણ એનાથી વિશેષ અમે આખા પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગને એક મોટું પ્રોત્સાહન પૂરી પાડીશું. ન્યૂ એન્ટરપ્રિન્યોર્સને અમે પ્રોત્સાહન પૂરું પાડીશું. ખાસ કરીને પ્લાસ્ટિક્સ અને એન્વાયરમેન્ટ એ બહુ મોટો વિષય છે. આ બાબતમાં પણ અમે કમ્પોસ્ટેબલ મટીરિયલો, ડિગ્રેડેબલ મટીરિયલો અને નવી ટેકનોલોજીવાળી મશીનરીને રજૂ કરીને અને પ્રજાની સમક્ષ એટલે પ્લાસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રી માટે, પ્લાસ્ટિક સેક્ટર માટે એક નવો જ મોડેલ રજૂ કરવાના છીએ. I am Jigis Doshi, past President Plast India 2022, past Chairman Plexpo 2010, past President GSPMA and CMD Visakha Group. We wish all the success to the Plexpo 2024. Exhibition is the best marketing tool for showcase your product to the Indian entrepreneur, Indian converter and whoever needs that product.
પેરેલલી ટુ ધ ઓવરઓલ વર્લ્ડ. તો હું તમને બધાને ખાસ ઇન્સિસ્ટ કરીશ કે એક્ઝિબિશન પ્લેક્સપો 2024માં આપ દરેક ભાગ લો અને આના સક્સેસના ભાગીદાર બનો. એન્ડ ધ પ્લેક્સપો ઇઝ ધ બેસ્ટ ટુલ બિકોઝ ધ ઇન્ડિયાની મેક્ઝિમમ પોલિમર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને કન્વર્ટિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આર સિચ્યુએટેડ ઇન ગુજરાત, અને પ્લેક્સપો ગુજરાતમાં ગાંધીનગરમાં થઈ રહ્યું છે. ત્યારે આપ દરેકને ખાસ ઇન્સિસ્ટ અગેન એન્ડ અગેન આઈ ટેલ યુ કે પ્લીઝ દરેક જણા પ્લેક્સપો 2024માં એઝ અ એક્ઝિબિટર પાર્ટ લો અને એઝ અ વિઝિટર્સ એની ચોક્કસ વિઝિટ કરો. અગેન વિશ યુ ઓલ ધ સક્સેસ ટુ ધ પ્લેક્સપો 2024.